So look at the dedication we have for you guys. So I'm sure you are going to honor. And for that, what do you need to do? So to honor us, what you are going to do? हाँ? क्या करोगे? ये अच्छे से पढ़ेगी, बाकी यस ना अच्छे से पढ़ना है. Just to let me start. I was up to my class 12th. I was a cricket player. Okay, I have no relation with any studies, nothing. I've never thought I will come into studies and education kind of thing. So when I was in class 8th, I had a match between, so in my team there was 2 wicket keepers. One was a Bengali guy and another was a Muslim guy. Okay. And basically, so obviously one wicket keeper is playing, so another will be sitting. So whenever the another wicket keeper was not getting a chance, so whenever he used to come in between the match, he never wanted to know what is our score, we are going to lose or we are going to win. Okay. Only his question was, "Ye keta kya chhede che?" Anybody who is Bengali here? Yeah, I hope you are getting. So first question he will ask, "ये केटा के छेड़े छे? इसने कि छोड़ा है?" And we used to say, "तीनटा के छेड़े छे?" "तीनटा? आमी तो दुइटा छेड़े छिलाम." And my coach was a Muslim. Okay. এই তো partiality আছে এখানে. I'm telling you in Hindi. देखो कोच कितना पार्शियल है. मैंने सिर्फ 2 कैच पिछला मैच में छोड़ा, मुझे बिठा दिया. Because he's a Muslim guy, na, he's leaving 3 catches and he's getting a chance. So same thing, and that guy used to all do the same thing. ये कितना कैच छोड़ा? 3 छोड़ दिया. 3 छोड़ा. सर मैंने 2 छोड़ा कब पिछली बार, और सर नहीं खिला रहे. बता यार ये क्या है? सर ना सोचते ना ज्यादा मुस्लिम को खिलाएंगे ना लोग कम्युनल सोचेगा. So one day what happened? That Bengali guy was batting and he got hurt. So he got some head hurt. And sir said, okay, you go and take some basic medicines. He went. So when he came back and he saw that we have to make hardly 20 runs. Hello. And he saw that we have to make 20 runs. We have 6 wickets in hand. So he thought to show his dedication for the country. Team. Aya aake keh raha, sir, ami batting korte jabo? Let me say in Hindi, okay. Sir, मैं बैटिंग करने जाऊं? बोला नहीं दादा तू रेस्ट कर, इजी है, 6 विकेट तो है, 20 रन ही तो है. नहीं सर, मैं टीम के लिए जान दे दूंगा. सर कह रहे साले टीम के लिए विकेट दे, कैच पकड़ा, रन बना, साले टीम के लिए जान देगा, मुझे जेल भिजवाएगा. So you don't need to do anything for us. Only one thing you need to do is that commit yourself that irrespective of mausam, irrespective of situation, time, just you need to give your 8 hours to your studies. Just keep on doing this for 2 years and you are going to get through this exam. I am telling you. कहीं लिख लो. वो वाला नहीं, लैला लिख के ले ले. ये ओरिजिनल वाले. कुछ मत करो. ऐसा कोई सॉन्ग है ना, कुछ नहीं करना है बस. ऐसा कोई सॉन्ग है ना, है कोई सॉन्ग है, बस 8 घंटे पढ़ना है, बस कुछ नहीं. किसी को कमिटमेंट नहीं देना है, किसी को भारत माता की जय नहीं करनी है, जो करना है करो, बस 8 घंटा. समझ गए? फिल्म देख के आओ 8 घंटा पढ़ लो, शॉपिंग करके आओ 8 घंटा पढ़ लो, किसी लड़ाई वड़ाई हुआ 8 घंटा पढ़ लो. 8 घंटा पढ़ लो, ठीक है ना? तो वादा रहा, अगला लाइन नहीं गाना है, वही उसी में तो देश बर्बाद हो गया. चलो, थैंक यू गाइस. सो रियली माय लेफ्ट लेग इज पेनिंग, बट once I saw your energy, I'm feeling so comfortable, so energetic, and I think my leg pain has gone. So मन करे सर तो आधी कप कभी भी चाय दे देना, कोई जबरदस्ती नहीं है, मन हो तो. So guys, thank you so much for smiling in spite of waiting for me. And I was also trying to, jump over the buses, and because I was also so excited to come here. And I hope we have met in our seminar last time. How many you were there? इतने सारे लोग थे, तो समझ तो गए ही हो गए. Okay guys, so I always take one commitment and dedication from my student. Just dedicate 8 hours.
You have 24 hours, 8 hours you need to sleep and all. 8 hours you have to do a lot of things, you know, which is your zone, which we have left. वो छोड़ आए हम गलियां. And online guys, sorry I was not able to say you, and most welcome. Thank you for joining the classes. Vikas and Sanjeev and all Anju and all the legends of KGS. So thank you for joining us. So guys, I hope you know that every... ओए, ये जाता कैसे है? हाँ. So guys, color is comfortable with you? यार हम ही लोग उल्टे हैं. Paper first, mains. Okay. So I hope you have seen the questions of last year, and around 50 to 60 marks this year. And we always expect out of 250, 50 marks question comes from this topic, and not only 50 marks, but you can cover your big area of essay also, which comes up to 50 marks. So if you have a good writing skill, good understanding of society, so I'm sure you will be able to score, and that is all interview also. In interview, you go in any interview, and questions on your social issues, gender, caste, class, reason, religion, communalism, and all things comes, which we are going to cover in this chapter. So guys, every teacher have their own way of teaching, I'm sure. Everybody has a different way. My teaching will be three things. One, that first, before I will start my topic, I will explain you the entire concept. Okay? No writing. That means I will say, put your pen down and listen to me. Okay? In that topic, in that part, you have to ask your question, you have to raise your query, you have to, whatever, it's a participation one. Okay? When you will say, now I have no more questions left. Anybody. And this question is, you must be knowing that the dedication of Khan sir is for whom? For the rich people or those who are coming from the grassroots. So this class will follow the socialism. Some people may be coming from Stephens, maybe Hindu college, but some people will be like me, who don't know from which college they are. Got it? Anybody who's like me? Yes. So I'm identifying with that guy. He's smiling like me also. Hi. Black shirt, yeah. So this class is for those people who are really believing that they are not into this. I will bring you here. That's my commitment. Okay. And second time, I will dictate and you have to write it. In third, we will take some of the questions on the topic. We will try to discuss it. And if you will be understanding, you will have to write it maybe here or maybe out of the class, and then next day we will discuss the question and I will start the another topic. Are you fine now? So, how's the Josh? Thank you so much. So, let's start. So, as you know, everything starts with the first word, and that is what? No. Society. So, what is society? So there are two types of people sitting in this class. One, who are always the toppers. Anybody who keeps on topping all the time? 9th topper, 10th topper, 11th topper, 12th topper. Nobody is like that. कोई ऐसा नहीं है. Yeah. So may I know your name? See, nobody have to stand, okay? I don't deserve that one respect. So whenever I ask question, जब मैं क्वेश्चन पूछे और थोड़ा फैल जाओ. हाँ बोल. What's the name? Nandini. So she is Nandini the topper. And anybody who's like me? Any guy? What's the name? Himanshu. So Himanshu is like me. So Nandini, Nandini, whenever you top,
So after the result, you must be feeling that your respect in the society has increased. Huh? How you come to know this? Anybody who comes, see, I am society and please, I want to facilitate you. Has it ever happened? Or see, we are the society, we want to say that you are so precious to us. Has it happened any time in your life? No. I say, don't lie. Yeah? It looks like a fool, but I'm not. कौन आके बोलता है हेलो मैं सोसाइटी हूं, मैं तेरी इज्जत करना चाहता हूं, तू बहुत अच्छी है? ऐसा कब हुआ यार? कुछ भी यार, कुछ भी कब हुआ ऐसा? ऐसा तो नहीं होता कभी, ऐसा नहीं होता. होता क्या है? लिसन, हुआ क्या होगा? शी इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस. लाइक से एनीबडी, लेट्स से शी इज हर फ्रेंड. ओके, yes, after being top, she came to her home and she will find that the quality of biscuit has increased. पहले पार्ले जी इसकी मम्मी देती थी, नेक्स्ट टाइम इट इज गुड डे, ओरियो, ठीक है ना. क्वालिटी ऑफ कप हैज चेंज. पहले था ना वो जिसकी डंडी टूटी रहती थी उसमें चाय आता था, अभी नाउ द न्यू वन, न्यू क्रॉकरी सेट. नाउ सडनली शी विल से इन फ्रंट ऑफ, सीखो कुछ नंदिनी से, सीखो कुछ नंदिनी से. मेरे क्लास में एक फैमिली थी, केसरी फैमिली थी. उसकी 2 जुड़वा लड़कियां थी, मेरे क्लास में पढ़ते थे 9th में. दोनों ही फर्स्ट आती थी, सेकंड आती थी, फिक्स था. और मैं नीचे से फर्स्ट या सेकंड आता था, ये 2 चीज फिक्स था. तो मेरे एक दिन पिताजी पीछे, केसरिया की बेटी को देखो, केसरिया के बेटी को देखो. हम बोले उसी को तो देख देखे अब क्या फेल करवाओगे? मतलब मेरे फादर चाहते थे मेरा बैक ही लग जाए. तो basically society, what I want to say, that society exists in our mind. That is why in sociology we call it society is an abstract phenomena. Like God, is it visible? Society is like that. Love and hate, it is invisible, that's called abstract. Society exists in your mind. When the quality of cup is changing, their body language is changing towards you, that is what we start feeling. Sometime you go on the road and someone will show you, ये उनकी बेटी है, ये टॉप है, and you will be like. फिर आता है मेरा भाई हिमांशु, इसकी भी रिजल्ट आ चुकी है. फिर ये जाएगा अपने फ्रेंड से मिलने, इसके पिताजी उसके फ्रेंड की बहन को बोलेंगे तू अंदर जा. फिर एक दिन होगा हिमांशु बेल बजाएगा, इसको दिख रहा है कि वो घर में है, उसकी मम्मी कहेगी नहीं है. हिमांशु को भी समझ में आ गया कि सोसाइटी क्या चाहती है. So basically this is what society is. Society exists in our mind. It is an abstract phenomena. Okay? Am I able to convey you what society is? Society is no one, that is not a person, it's a group of person that is going to respect you or disrespect you. You start feeling when you interact with the people, the way verbally and non-verbally they communicate you, that is what our society is. So is it? One day this girl came to me, what's her good name? Mitali. Mitali said, sir, I have a question. What is? मैंने कहा यार कौन सोशियोलॉजी का कंसेप्ट है. Then I say, write the line. Then she wrote this. And she was reading it, is. So, हिमांशु और हम इसी कैटेगरी के, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं इज, फिर जाके टीचर से बोलते हैं, फिर टीचर मारता है 18% GST लगा के. So, first thing is that you got what society is. Write down first, what is society. So, write down heading, what is society. What is society? ठीक है? So लिखो first, society is an abstract phenomena. One, an abstract phenomena.
ठीक है. First, so abstract means you cannot see it, you cannot, just you can feel it. Okay. Second, it reflects in the pattern of interaction. It reflects in the pattern of interaction of the people. Please underline interaction. I will explain you. See, when I entered in the class, and most of you tried to stand up. You tried. Some people do like this. इधर वाले stand होते हैं, इनको लगता है देख रहा है, उधर वाला होता है ना. Yeah. A few years back I was sitting that side. So exactly I understand what you're thinking. So basically, so that was the gesture you tried to show, and what I took the meaning that you want to respect me. Okay? Similarly, let's say suppose I'm entering in the class and you're like this, let's say this girl, Mitali, because I said something, let's say, and whenever I'm coming to the class and she is like this. So this non-verbal communication, what she want to convey me, get lost. ये है ना, दफा हो जा. So basically, the way we interact with each other, that is what the complete continuity, and then the entire zone of interaction is our society. So the way we interact with each other, that I said, the way they were interacting with you after your result, the way people interacted with you after the result. फिर पिताजी कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें पैदा करके पछता रहा हूं. तो हिमांशु ने कहा कि मैंने कौन सा एप्लीकेशन दिया था. So one time come we start interacting this way. ठीक है? So first, how we interact with each other. That is the first aspect of society. Now the question is, how we will interact with each other. Who decides this? Anybody, when you joined this KGS, anybody like sir came to you and say, whenever sir will come, you have to stand up. Whenever, how do you know this, that when I will enter in the class and you have to, at least you have to try to stand? Anybody has told you? Or you have to wear a particular kind of dresses, nobody is in shorts, I am also not, and you too. How do you know this, that you have to wear proper pant, shirt kind of things, then you have to stand and then look at your body language, you all trying to look a good boy and good girl kind of images. बाहर निकल के सुट्टा मारोगे, फिर इधर हम लोग को देख के ऐसे कर लोगे. नहीं, हम देखे पीते, फिर देख एक दिन मैं ऐसे आ रहा था, लड़का उधर से आ रहा था, पीते आ रहा था, तो माई हाइट इज लिटिल, तो मैंने सोचा क्यों इसको एम्बैरस करूं. आई वाज लुकिंग लाइक दिस एंड सडनली उस सामने ऐसे कर रहा है, अब इधर से धुआं निकल रहा है. मैंने कहा कोई बात नहीं, कंटिन्यू. So how do you know this? That who have told you to do all these things? Anybody? अच्छा, school has taught you stand up, don't, when you are smoking, do it, take it back. हाँ, ऐसा स्कूल ने बोला कि सिगरेट पीते समय पीछे कर लेना. That is called institutions. Second, third is institutions. Institutions. Education is also an institution. So institutions, लिखो, dash institutions is a set of, it is a set of rules and procedures. It is a set of rules and procedures which individual needs to follow, during their interaction. Anybody is married here? केवल मैं ही हूं, और तब भी तेरी शादी हो गई. Look at, still is syllable. So basically, you must, anybody whose brother and sister is newly married in last 1-2 year? Yeah. किसकी भाई की, किसी की भाभी आई है नई नई मार्केट में?
तो जब इसकी भाभी आई होगी ना, शुरू कुछ दिनों में तो उसके शर्मिला कोई होगा नहीं, पापा जी, भैया जी, नहीं जी, खा लीजिए, नहीं जी, पानी नहीं जी. So basically, how she knows that she have to act like a very humble, shy girl? Anybody has taught her? Marriage is an institution. Education is an institution. Economy is an institution. Religion is an institution. So we have a set of institutions in the society which has given you a book of rules and regulations, and whenever you have to interact with others, you need to follow all those rules and regulations. The same guy, so how beautiful he is. इसको ससुराल भेज दो, इसका एटीट्यूड देखो. दामादों का देखो ना ससुराल में एटीट्यूड. जो बाइडेन. Who has taught you that when you are a damad and you have to act like this? He knows because he is under the institutions called marriage. How a girl knows that when she has to go to ससुराल she have to act like a shy girl? जब ये गर्ल्स अपनी ससुराल जाती हैं, लुक एट, गिरते ही नहीं है. जब अपने घर आती हैं, भाई एक गिलास पानी दे दे. So why not they're doing the same thing in their ससुराल? So basically ससुराल, institutions is the set of rules and procedures. It is not a constitution kind of thing. But from the childhood, you are seeing that how your bhabhi is behaving, how your didi is behaving, how your brother is behaving, how your jija is behaving, how your father behaves, how your mother behaves, and that all you start learning from your very childhood. And when you grow, you following it. So it is not something that someone is teaching you. You are observing, you are following, you get suggestions. नहीं बेटा, जैसे suppose करो this girl, अभी जैसे she's after 2, 3, 4 years, अचानक से देखना इसकी मदर कहेगी बेटा थोड़ा बाल बढ़ा यार, लड़के देखने वाले आएंगे. फिर ये कहेगी क्या इसमें प्रॉब्लम है बेटा तुझे नहीं पता ना. हमें तो सांड को गाय कह के बेचना है मार्केट में. बॉयज बीवेयर, जो दिखता है वही होता नहीं है. सो बेसिकली वेरी आफ्टर फ्यू maybe months, years, you will start learning and you will start getting suggestions. Don't shout loudly, don't behave like this. तुझे दूसरे के घर जाना है, चाय बना, ऐसे चाय बनाएगी, वो लोग वापस भेज देंगे. It oftenly happens with the boys and girls. Boys जब भी नहीं पढ़ते हैं, हिमांशु भाई, पढ़ ले शादी कौन करेगा, पढ़ ले नहीं तो कौन तेरी शादी करेगा. फिर जब इसकी शादी होती है, फिर बोलता है कि इसके लिए मैं मैथ्स वो कॉस थीटा गामा पढ़ता था इसके चक्कर में. और लड़की खाना बनाना सीख ले, खाना बनाना, नहीं तो शादी अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे. जब लड़के मिल जाते इसी के लिए मैं लौकी की सब्जी बनाती थी. दिस इज व्हाट हैपनिंग. सो बेसिकली रूल्स एंड प्रोसीजर्स यू लर्न, you see, you get suggestions, you get, so it is not your choice and you don't get a book. You're learning, every day you're learning. We have learned from our teachers, like when we were a student, whenever teacher used to come, you used to get a stand up. Now we are expecting this because now we are a teacher, and vice versa, everything. So when you are a newly wedded, old wedded, how fufa and jija, certainly they behave differently. They have learned from their fufas. And then fufas, then fufas, then fufas, University of Fufas, University of Jijas, everything, everybody knows. So everything we have an institution which taught you how to interact when you are interacting with others. You do not have a choice. It's not your choice. When you go back to your home, exactly you see, when you're entering the home and your father in front of, he automatically will say that he's like joining his legs. He knows what you are going to do. How do he knows? It is expected one, isn't so? And sometimes तो ऐसे करके खड़े रहते हैं, हम ही तो भूल जाते हैं. फिर हमें याद आता है, हाँ अब तुम लोग यही सब दिल्ली जाके सीख रहा है. तो हमें याद है कि इनको पैर भी छूना था. So it
family, marriage, religion, economy, polity. We have a big set of institutions which teaches you rules and regulations of interaction. Is it fine? Pakka? Ab now question is, suppose this girl, Mitali kaun thi? Mitali, is not interacting with me. Kahan gaya interaction? She is not interacting with me as per the rules and regulations of the institutions. What will happen? मान लो, okay, मुझे नहीं रिस्पेक्ट करना है, मुझे क्लास में बदतमीजी करनी है, कोई क्या कर लेगा मेरा, तो what will happen? Let's say someone is entering into the temple and having tattoos and all swag, कोई क्या कर लेगा? कोई कुछ नहीं करेगा? करेगा भाई. Then we have fourth thing is organizations. Organization keeps on watching us whether we are interacting as per the institutional norms or not. Why hundreds of police motorcycles are roaming all the time? Just they are watching that everybody is interacting as per the institutional norms or not. If you are not driving left side, शादी हो गई, यू आर नॉट इंटरेक्टिंग लाइक अ बहू, द मीडिएटर. भाई साहब आपने क्या दिखाया था, सैंपल कुछ और, प्रोडक्ट कुछ और. वो कहेगा भाई साहब बिका हुआ माल वापस नहीं होता, आपको पता है. गारंटी के दौर में नहीं, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें. आपको पहले ही, आपको भी तो थोड़ा जांच करना चाहिए था. अब भाई साहब यही रहेगा, यही होता है ना. सो वी हैव ऑर्गेनाइजेशंस, वी हैव गवर्नमेंट, वी हैव पुलिस, वी हैव जुडिशियरी, एंड इन द विलेजेस वी हैव पंचायत्स फॉर एवरीथिंग, एंड पंचायत सिट्स देयर. So these are the four things which constitutes a society. Once more, or you got it? Any one more? इसमें one more है क्या बे? क्या बताऊं? First, society is abstract, दिखाई नहीं देता. Second, it reflects how we interact with each other. How we will interact with each other, it is decided by the institutional norms of the society. And organization is a monitoring agency which keeps on seeing whether we are interacting as per the institutional norms or not. So this in totality called as, since all these four things differs from one society to another, that is why we say वो अलग society है, वो अलग society है, मेरी society में ये सब नहीं चलता, उनकी society में ये सब चलता है. So this all four things keeps on differing from one place to another, and that is why we have a different societies. We all come from a different society. What is different? These four things are different. One thing is sure, one thing is common, that is abstract. Remaining three things, how we interact with the one society. Let's say anybody is a Muslim here. Let's say, suppose we touch feet of our elders, okay? They say salam. So see, their interaction is different than us. वो तो पैर नहीं छू रहे, ठीक है? And now problem is that when we meet our Muslim friends and we see their parents and we touch their feet, so sometimes they feel very uncomfortable because they are not habitual of it, because they do salam. ठीक है ना, because they don't have to touch the feet. So see, their interaction is different. Then institutions are also different. Their marriage is different than us. Their religion is different than us. So that makes difference in the interaction also. Similarly, their organizations will be different. So that is why their society is different than our society. So we say na, nahi, hamari society mein ye nahi chalta. You take dowry, they pay meher. That is what the difference is between the interaction between groom and bride. That also are different. So that these all things differs from one society to another, and that is why we have a numbers of society in the world. Is it fine? Pakka? Any question? नहीं पूछ लो. भगवान के लिए कुछ पूछ लो. नहीं पूछोगे. Pakka? So this is what society is. Is it clear now? Keep in mind, you don't need to memorize the things. Try to develop concept. अच्छा ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, यही होता है. ठीक है ना? Because कितनी चीजें याद करोगे? Now we will start our topic that is called salient features of Indian society. Of Indian
society. Anybody who comes from Agra? Nobody is from Agra. Anybody who comes from a place where something is special there? कहते हैं ना मेरे यहाँ का ये बहुत स्पेशल है, रामपुर की चाकू, बिहार का लिट्टी चोखा. ना, लिट्टी चोखा ऐसे नहीं होगा. क्या है? तीज. कहाँ की भाई? अच्छा, तू दार्जिलिंग का है. तो हम लोग कैसे मान लें? तूने किसी को पिलाया, कभी ला के दिया? कभी ऐसा होता है कि सर 1 किलो चाय आपके लिए? क्यों नहीं चाहिए? क्वेश्चन यार इस पे भी. अच्छा, वन गाय इज फ्रॉम नेपाल. सर विकास रौनियार इज फ्रॉम नेपाल. नेपाल हमारे फॉरेन स्टूडेंट्स भी हैं. सर सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन. यार सुनो, तुम लोग की टीवी थोड़ी दूर है, मैं चश्मा उतारूंगा तब दिखेगी. ये नजदीक का देखता है, दूर का दिक्कत करता है. क्या चाय बताया? यस. सो बेसिकली व्हेन वी से सैलिएंट, सैलिएंट मीन्स something special which is not. There are two words I hope you have heard. One is called salient, and what is the opposite of salient? It's called general. General means it is found everywhere. These are the antonyms. Salient is something special which is found one place and you cannot find it anywhere else. And general which is found everywhere. जैसे चाय is general, but दार्जिलिंग का चाय is, उस भाई के खेत का चाय is salient चाय. लेकिन वो तब मैं बताऊंगा कि वो जनरल था कि इधर. ठीक है ना? माई टीचर वॉज सो फॉन्ड ऑफ लिट्टी, ही वॉज फ्रॉम हेयर, एंड बोलते थे बिहार से लिट्टी लेके आना. हम लोग यही करोल बाग से खरीद के, सर माँ ने भेजा आपके लिए अलग से. ऐसा नहीं बाहर से खरीद के, सर दार्जिलिंग का चाय है. सो वन इज दार्जिलिंग टी, अनदर या कहां क्या? अमरूद. या गुआवा. या दैट्स ट्रू. और भी अंदर जो रेड रहता है. देखिए भाई, जिसकी जो स्पेशलिटी है वो यहां ला के एक बार दिखाएगा सबको. किसकी लीची? कौन है मुजफ्फरपुर? अरे कहां के हो भाई? कौन है मुजफ्फरपुर का? यस. सो सबको एक दिन यही होता है. सिलाओ. देखो सब बिहारे है क्या यहाँ? अगर सब बिहार के ही हो तो वाई इंग्लिश एंड वाई हिंदी? लेट्स स्टार्ट भोजपुरी. समाज बुझा गईल. देखा मैं दो चीज होला. एगो तो पहला ही देखाई उखाई ना दी. अगले दिन सारे लोग पगड़ी वगड़ी बांध गए, गुरु जी प्रणाम. So देखो, so as I have said, we have around 200 countries in the world. ठीक है ना? Then in this country we have, I guess, lakhs of societies. But when we say salient features of Indian society, that means we are going to identify some of these four. This you cannot find. This is not. We will try to find something new in all these three, which makes Indian society different than all the societies of the world. That is what called salient features of Indian society. Like marriage. Marriage is everywhere, but what is different? What is salient in Indian marriages? Arrange marriage, बे. झूठ बोल के कुछ भी चिपका दो, दूसरे का खेत दिखा के सब इसी लड़के का है. पूरे इलाके में इसकी जैसी गाय नहीं लड़की मिलेगी. So basically you will never find arranged marriage anywhere in the world, and that is also into dowry. Okay? Caste system, have you ever heard anywhere in the world? Polytheism, we have क्या पता कितना करोड़ gods and goddesses we have, deities we call. So basically caste system we have, then we have joint family we have, arranged marriages we have. These institutions and organizations makes Indian society salient features. And I'm telling you, because this is a general studies class. In sociology class, when we became the colony of the world, especially Europe, and when the
intellectuals and the scholars came to India, and they were shocked to understand what kind of society it is. They have never heard, never seen. It is a very different society. And that led to emergence of, have you read history? Have you heard Indology, Max Muller and all? Then they realized you cannot study Indian society from the point of view of the Westerns. So they started understanding Indian society from the Indian point of view. That is called Indology. If it will come somewhere, I will teach you also. Got it? So we have a lot of institutions we have which is completely different. It is only found in India, nowhere else. We have 200 countries in the world. So may I start? Pakka? So let's, first salient feature is Verna and caste system. First, Verna and caste system. Oi. You guys have waited too much for me today, na? But really, it's so pathetic. From Rani Jhansi up to here, I was driving in only first gear. So you can imagine my, but still I'm trying to look energetic, which I'm not. So Verna system and caste system. Have you read something in history? क्या पढ़े बताओ? हाँ? वन कौन बोलना चाहता है? 4 वर्णा होता है, बोलो बोलो। ये उठता नहीं है क्या? है, मिल गया सॉरी। हाँ, अरे ये तो सबको पता है यार। कुछ ऐसी बात बता कि यूपीएससी तैयारी करने वाला बोल रहा है, ये तो 5वीं क्लास में भी पढ़े थे। कौन बोल रहा है? बोलो। रुको, हमारा हिमांशु बोलेगा। बोल भाई। अरे बोलने दे। ओ यस, इसके बाद भी तू टॉप नहीं कर पाया। टॉप करना, 9th के बाद कौन टॉप करता है यार? So, shall we write something? Let me dictate you few lines and I will explain you. Okay? लिखो। Verna and caste system. Verna and caste system is a form of social hierarchy. Social hierarchy, make it underline. It is a form of social hierarchy which is decided by the birth, and privileges and disadvantages are accorded on its basis. On the basis of birth. Okay? So please read the line. It is a form of social hierarchy. Everywhere, I am sure you must have heard that social hierarchy is found everywhere in the world. Have you ever heard an egalitarian society anywhere? कब सुन लिया? Have you ever heard egalitarian society? नाम का ये is right. Any society you go in the world, you will find hierarchy. Somewhere on the basis of gender, somewhere on the basis of money, that is called class system. Somewhere on the basis of religion, somewhere on the basis of your caste, class, creed, color, kind of things. So this is also a form of social hierarchy which is based on your birth. The day you are born, your privileges and disadvantages are accorded the day you are born. Either you born as a Brahmin, Kshatriya, Vaishya or Shudra, and accordingly your privileges and disadvantages are allotted. This is called Verna system. Okay? Up to here, all good? Pakka na? Change the paragraph. Nikho. The literal meaning of, change the paragraph. The literal meaning of Verna, Verna is color. The literal meaning of Verna is color.
Change the paragraph. लिखो. First time, the term Verna, first time the term Verna is mentioned in what he's saying. This guy is Sanjeev, Anju. In Rig Veda, 4 Varnas mentioned. Wow. अंजू, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता पास होने से इस बार का पीटी. डोंट वरी. 10th in 10th mandala is chapter. 10th mandala of Rig Veda in Purush Sukta Haim. Haim is called Slok. Purush Sukta Slok और Haim. दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? मैंने नीचे लिख दिया क्या? This is disturbing ना? नहीं दिख रहा? टीवी में दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? ओके. अरे पुरुष सुक्ता हाइम. चेंज द पैराग्राफ. लिखो. द ओरिजिन ऑफ. ओए, मैं टीवी से बाहर नहीं जाना है. हम लोग बात करते करते वहां चले जाते हैं, पता, इधर से गायब. फ्रेम में रहना है. जब ऐसे कैमरा लगता है ना तो सब कहीं लगता है कि हम लोग भी एक एक्टर हैं सर फ्रेम में. अभी तो ये बोला नहीं तो बोलता सर थोड़ा फ्रेम में. अभी मेरा पहला दिन है ना तो ये भी इज्जत कर रहा है. धीरे से एक बड़ा सा डंडा रखेगा, ऐसे करेगा, मैं इधर हो जाऊंगा. जब हम लोग बचपन में भैंस चराते थे ना तो हमारे पास एक डंडा होता था, उसी से भैंस समझ जाते थे. ऐसे मारे तो इधर मुड़ जाते थे, तो वहां से एक डंडा से ऐसे करेगा तो फिर हम फ्रेम में आ जाएंगे. क्या लिखा? लिखो. द ओरिजिन ऑफ वर्ना सिस्टम. The origin of Verna system have many theories in humanities, in which some of the prominent theories are following. In which some of the prominent theories are following. First, political theory proposed by Abi Du Bois. Though the spelling is Du Bois, but you have to read it Du Bois because he's a French, so in French last word will remain silent. So it is Du Bois, but it is written Du Bois. Okay? Abi Du Bois, who believes that क्या हुआ? Who believes that Abi Du Bois, who believes that Verna system is the brainchild of Vikas Rauniar is writing hierarchy means padkram. Padkram means ये stairs, social stair. Rauniar sir, stairs. Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra. ठीक है? Is the brainchild of Brahminical mind. Brahminical mind. It's a very famous term, Brahminical mind. He believes that Brahmins wanted to remain superior for longer time. They created Verna system. In bracket, this theory is rejected. Why this theory was rejected?
He says that Brahmins created Verna system because they wanted to remain superior for longer time. So the critics believes that they did not have military, they did not have money. So how they impose their superiority on others? Just because you say that I am superior and all the people will accept this, that you are superior, is not going to digest by anybody. So to impose your superiority, you need military power, you need money power. They did not have this. So how they impose this? So that is why this theory was rejected. Okay. Second is occupational theory. Occupational. Second is occupational theory, proposed by Nesfield. Nesfield. He believes that caste is, means Varna is an occupational group. Is an occupational group which was transferred from one generation to another. Which was transferred from one generation to another. What he's saying is that as the time passed, different occupations emerged in the world, and one family started following a particular occupation. The same occupations they transferred to the next generation, and that became the Varna and caste system. मैं बोलता रहूं? Yeah. Now the critic says that occupational groups are found everywhere in the world. Then why we do not have a Varna system there? In every society we have occupational group. Jewelers are also in England and America, but they are not called Sunar there. Yes or no? So basically occupations are divided everywhere in the world, but they do not have a Varna system. That means this is not going to be the proper logic. So likho, change the paragraph. Critics rejected this theory also. Critics rejected this theory also. Who believes that occupational groups are found everywhere. Occupational groups are found everywhere, but why not Varna system? ठीक है? ठीक है? Third is religious theory. Religious theory. Religious theory proposed by Hocart and Senard. Hocart and Senard. I think they must be brother. Maybe. Hocart and Senard. They believes that Hindus were, and don't get into debate of Hindus and Sanatanis and all. Okay. The one thing, one university you have to leave, you are preparing for the civil services, that is your WhatsApp university. The day you start relying upon what you get on WhatsApp and all, so then one thing is decided that you are going to fail here. Just rely upon the textbooks or what we are saying. What we are saying means just you don't have to follow blindly. But WhatsApp university, Sanatani, ये हिंदू नहीं है, वो कुछ नहीं, बस वो सब वही है. ठीक है ना? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हर चीज़ में. एग्जाम में नहीं पूछेगा कि व्हाट्सएप पे सनातनी कौन है. ठीक है ना? Third one is Hocart and Senard, who believes that Hindus were a religious group, religious, who oftenly used to perform क्या बोलते हैं इसको,
वही, that is what the problem with Hindi and English, na? Yagnas, 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 in which every group have to take, every group have to take or contribute in a particular way, in a particular way. Let's say one yagnas is going to be performed, then you have to offer the mantras, someone is offer pot, someone is offer jewelry, so that becomes the varna. You got it? The person who was performing, मेरी है, अब देखो यही इंस्टीट्यूशन है, तुम तो सोचे हुए, तुम किसी के दिमाग में है कि मेरा है, तुम लोग के आया दिमाग में, तुम्हें पता है स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती, क्योंकि मुझे भी पता है तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि मेरी भी इज्जत नहीं थी. So we have a same set of, only the generation changes, but the one thing remain constant is that you have no इज्जत, and that is why you're trying to get the इज्जत. ठीक है ना, नहीं तो ऐसी रह जाएगी. तो मैं पी लेता हूं, आप लोग अपनी इज्जत बढ़ाओ. यस, फिर देखना तुम आओगे तो ये लोग 2 चाय तुम्हारी, हमारी 1 चाय, हमारी भी लेके तुम्हें दे देंगे. हमने क्या कर रहे हो सर, इन्हीं का आया 30 रैंक, हम कह दे दो उसको, ये बोतल भी दे दो, ये घड़ी भी दे दो. Okay, so basically in yagnas, everybody has to contribute some way. Someone is offering flowers, so they became mali, gardeners. Someone is offering mantras, they became brahmins. Someone is offering like earthen pots, so they became kumhars. So the person who was performing some duties in the yagnas, that became their varna and later caste. This is what Hokard and Senat is saying. Okay, what was the line? Particular way, like mantras, flowers, mantras, flowers, earthen pot, jewelry, milk, curd, ghee, animals, etc. That became respective varnas and caste. Change the paragraph. This theory is also rejected. This theory is also rejected. They become their varnas and caste. Because this theory is also rejected because in many primitive communities, these rituals are continued but they do not have Varna and caste system. But they do not have Varna and caste system. Agree, guys? So now came the poster boy, and that is the best theory is, have you heard? So which is the accepted theory? History. Anybody who knows? हाँ, तो किसका है theory? Max Muller का नाम. Next is, and the most accepted one is racial theory. Racial theory. What you are saying is Aryan theory. Racial theory. Proposed by Herbert Risley in his book Peoples of India. In his book Peoples of India. तुम्हें लिखो.
रिजले बिलीव्स दैट, रिजले, रिजले ये तो लिखा है, रिजले कहाँ गया, ये रहा, रिजले believes that the Verna system was brought to India, by Aryans of Central India, Aryans of Central India, who themselves were divided, who सेंट्रल एशिया, मैंने इंडिया बोल दिया क्या, जानती हो ना, चाय पीते पीते दिमाग इधर उधर हो जाता है, ऊपर से उम्र का प्रभाव, ऊपर से गाड़ी चला के आए हैं, सो बी वेयर ऑफ इट। क्या लिखा, they themselves were divided into three varnas, Brahmins, Kshatriyas and Vaishya, called as Dvij or twice born, Dvij or, these three varnas are called as Dvij or twice born। द्विज का मतलब दो बार जो पैदा होता है, द्विज। लास्ट लाइन बोलूं कहां से, who themselves were divided into three varnas, Brahmin, Kshatriya and Vaishyas, called as Dvij or twice born। Primarily they are whites, उसी में primarily they are whites, इनकी शक्ल थोड़ी white है, बॉयल एग्स जैसे होते हैं ना कलर। Primarily they are whites, उजला, उजर, they are whites। Change the paragraph। Because of their better military might, 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 they were able to invade natives of India who were primarily blacks, and force them to join the Verna system as a fourth Varna, and forced them to join Verna, fourth Varna, and developed fourfold Chaturvarna system, fourfold Chaturvarna system, namely Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudras. Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudras. Now wherever they invaded and spreaded, they continued this system. Wherever they invaded and spreaded, they, अच्छा मुट्टू लिख रहा है धीरे से पढ़ाइए, मैं फास्ट बोल रहा हूं तो बोलने का कोई पैसा मांग रहा हूं, बोल दे धीरे बोलो। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना गाना नहीं सुना है, तो वो यहां भी बोल दो धीरे धीरे से मुझे पढ़ाना। बेचारी हमारा कलम बदल के लिख रही है।
इसको लगेगा दूसरा कलम फास्ट होगा, अरे बोल दो। वेन एवर यू फील कि आई एम सी, बिकॉज थॉट हैव इट्स ओन स्पीड, रोक दो, यू हैव अ ब्रेक। बेचारा स्ट्रगल कर रहे हो तुम लोग, हम लोग नहीं पता चलता ना तुम्हारी स्पीड क्या है, एक दो दिनों में पता चल जाएगा तेरा यही स्पीड है। हमें लग रहा तुम लोग हम लोग से फास्ट जनरेशन हो, जिस तरह से टाइप करते हो मोबाइल पे, थोड़ा इस पे भी क्या लिखा लास्ट लाइन, wherever invaded and spreaded, they continued this system which took pan India character. पूरे इंडिया, पान वाला pan India character. So this is one of the most accepted theory we have, that now you wanted to know two things. I hope you want to know two things. First, why they came to from Central Asia to India, number one. Number two, you must want to know that how they won. Third, you want to know, what do you want to know? First two is more important. क्या? इसके बाद caste system आएगा ना. Caste system is the extension of Verna system. So basically you need to understand little geography. Still you look at the world. In the terms of weapons, white supremacy is still there. Yes or no? Have you heard any black country which is so good in weapons? Anybody? Any black country who is doing so great in inventions of weapons? हुक्का ब्लैक हो गया भाई, समझा इसको? सुना है? नहीं सुना होगा. Have you heard any black country which is in terms of culture, music, dance, they are not superior? ब्लैक से कितना भी डांस करा लो, 6 घंटा कर सकता है, उसको साइंस पढ़ाओ माथा खुजलाने लगेगा. दिस इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम thousands of years. Whites will be always better in technology and we will be always better in literature. धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना. अबे तेरे पास काम धाम नहीं है, धीरे धीरे सब करेगा. जल्दी जल्दी काम कर, यूपीएससी भी देना है, सब काम धीरे ही धीरे करता रहे. 6 साल में तो तेरा अफेयर खत्म होगा, तो तेरा अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा. काय धीरे धीरे काय करेगा? कुछ मतलब टाइम की कोई वैल्यू नहीं है. धीरे धीरे से जिंदगी में आना. पहले तो धीरे धीरे आने में 4 साल लगाएगी, फिर जब तक सब होगा अटेम्प्ट करता हूं. ठीक है. सो बेसिकली लुक एट, क्या हुआ? मेरा भाई क्या बोल रहा है? देखो, बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस. सबके साथ होता है भाई. सुनो, देखो, you need to understand that these all supremacy in terms of weapons. You look at all the great weapons are made by the whites. It is not from today, from the super ancient period when we were like primitive. Why? So if you understand little geography, I hope you must have heard. I hope those who are whites, they are called as Caucasus in terms of race. Have you heard? And where is Caucasia mountain? वेस्ट एशिया में है, उधर जर्मनी वर्मनी की तरफ है. अरे उधर जर्मनी वर्मनी के साइड में है कहीं. एक बोलो ना जिसको ज्योग्राफी आती है. कैसियस तो यार यूरोप में है, जॉर्जिया की तरफ है. जॉर्जिया तो खुद खाए बिना मर रहा है. कोई अच्छा कंट्री बताओ ना. इधर ही है. अरे रशिया वशिया की तरफ होगा ना. ग्लोब है क्या? अरे कहीं होगा यार, कहीं बढ़िया जगह होगा. सो बेसिकली दिस इज Caucasus mountain. So they come from, I hope you understand, you look at the average temperature of this society. First, the temperature will be most of the time into minus. So wherever the temperature will be less, the people will be fair. ठीक है ना? So first people will be fair. And to
survive, what they need to do when everywhere is like we have snow and winter, so what they will eat? They will eat gajar, मूली, आलू kind of things. यही खाएगा. Yes, किसने बोला? वो खाएगा मीट. मीट कहां से आएगा? बाजार से. मीट आएगा एनिमल से. वाह, सोयाबीन से. एनिमल से. मीट कहां से आएगा? हंटिंग से. हंटिंग से. हंटिंग. हंटिंग कैसे होगा? वेपन से. वाह, वेपन से. तो जब हंटिंग होगा वेपन से, तो वेपन कौन बनाएगा? ठीक है. सो टू सर्वाइव देमसेल्व्स दे नीड टू innovate and develop those things, otherwise they will die, and nobody is going to die. So necessity is the mother of all inventions. So because of the climate they live, it was obvious that they are going to make all kind of these things. So first they started with the spearhead, भाला. ऐसे फेंक के मारते हैं जानवर को. भाला मारा. भाला. Now you look at the missile. Everything is the extension of that spearhead. That भाला कहां तक जाएगा? जहां तक हमारा वो लड़का मारता है. तो मारता होगा मे बी 100 मीटर. 100 मीटर नहीं मारता है. 90 मीटर. 90 मीटर मारता है. लेकिन अगर वो डियर भाग गया 150 मीटर, फिर तो भाला क्या करेगा? तो फिर आया bows and arrow. What is bows and arrow? Is the now extension of bhala. Now next came katta, extension of bhala. Ultimately you see missile or whatsoever, everything is the extension and better form of spearhead. Yes or no? So they developed this. Now you come to India. Everest, ओए इसको मैंने ऊंचा क्यों कर दिया? इंडिया के लिए ये काफी है. This is India. Average temperature 20, ज्यादा होगा, 30, 35. So when you have a temperature of 35, you will be fair or dark? Dark. तो काय फेयर एंड लवली लगाते हो? कोई फायदा है? हाँ? धोखा है. डार्क. What you will eat in 35-degree temperature? Fruits and vegetables. Fruits and vegetables. To get fruit and vegetable, what do you need? You need nothing. आम के पेड़ के नीचे बैठे रहो, अपने गिरेगा? नहीं गिरेगा. अरे यार, वेजिटेशन तो अपने आप होता है ना. So you don't need to do anything. क्या? आग लगा देगा? क्या कह रहा है? किसके नीचे बैठेगा? हाँ तो बैठेगा. बैठेगा. हाँ. So you don't need to do anything, because ultimately you have a tree, you have everything. You go to a village. You must have some trees. The season comes, and in every season you get something. Yes. When you don't do anything to, water is everywhere, fruits and vegetables are everywhere. Now you have plenty of time. What you will do? You will develop Bihu, Holi, Diwali, Chhat, Somari, Budwari, Sataisa, Chatti. Because you have plenty of time. So in the plenty of time, what we become? We become literate. Literature, novel, पोएट्री. ये खाली आदमी क्या करेगा? उसको सर्वाइवल के लिए उसको हंटिंग पे जाना है. हमें कुछ करना ही नहीं है, तो हमें धीरे धीरे जिंदगी में आना, दिल को चुराना. Look at, for everything, every step we have rituals, because this is the way we used to pass our time. Yes or no? So that is why you will always find that the literature of blacks will be always, all the great thinkers, poets, this and that, Michael Jackson, सब उधर ब्लैक ही होगा. लता मंगेशकर, कभी भी देखना, लिटरेचर में देख लो, कभी भी ये लोग नहीं रहेगा, हम ही लोग रहेगा. और जब मिसाइल बनेगा, ये लोग आ जाएगा सबसे पहले. So this is the way we developed ourselves.
This is the way they developed themselves. Then from Caucasus Mountain, when they had a horse and weapons, they moved towards the deserts of Central Asia, Iraq, Iran, and then they realized, okay, at this side we have a good position of food. They came to India, they had the weapons, and we have the poetries. So there was a fight between weapons and poetries. ठहरो, हम शास्त्रार्थ करेंगे. उसने मारा पटाख, बोला कैसा आवाज लग रहा है, यहां ज्यादा, यहां से जो नाड़ी निकल रही है. सो दिस इज द वे दे डिफीटेड अस. एंड वंस दे डिफीटेड, बोला ऐसा है, तुम मेरा सुबह झाड़ू मारना, शाम को पोएट्री लिखना. एंड दिस वे वी बिकम देयर स्वीपर्स एंड ऑल. दिस इज व्हाट द हिस्ट्री ऑफ racial theory. They were white, we were blacks. They defeated us and forced us to become their servants. That is what called Shudras. This is the racial theory of origin of Verna system. Any question? You can ask any question. Feel free to ask anything. Otherwise, I will go into the next term. Any question? Are you finding it more logical than other theories? Yeah. हाँ, ये तो बहुत इजी है. दैट इज वाई यू विल ऑलवेज हियर दैट द इनिशियली वर्ना सिस्टम वाज बेस्ड ऑन कर्मा, लेटर इट बिकेम हेरिडिटरी. सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. मे आई एक्सप्लेन दिस? You got this? May I explain his question? Before coming to India, they had a division of labor because they were the vagabonds. They used to move like in a group. So basically those who were young, smart, strong, they were supposed to take care of the security of their group. So they were used to call it Kshatriyas. This was not a caste or Varna. This was something like you call soldiers. Out of those who were little older, whatever the experiences they have from traveling and all, they have to share, they have to transfer it to the another generation. They used to be called as Brahmins, because in our society we call them senior citizens. So they were not Brahmins by born. Once your age is 60 plus, now we call senior citizens, they used to be called as Brahmins. Those who were young like you, they used to be called as Kshatriyas, and you are supposed to take care of and all. And those who were like me, lazy, work, nothing to do, idiots, lazy, jobless. ये क्या, चल तू भैंस चरा, गाय धो, गोबर हटा. So my kind of people were called as Vaishyas. Once they came to India, so they got the solution of the third generation, that is the service sectors, they got it. And from here, they never wanted to get mixed up. They made it rigid that only people will marry these people this way, and that led to a formation of karma to birth-based system. Done? Any more? Yeah. टाइम पीरियड मैं नहीं बता पाऊंगा, ये हिस्ट्री वाले सर ज्यादा बेटर बताएंगे. बिकॉज क्या है ना, हिस्ट्री सोशियोलॉजी is different than little history. History bases on certain facts. We travel through logic. We never look at the dates and times and all. क्या हुआ होगा, क्या हुआ. Sociology has nothing to do with the facts kind of date and carbon dating kind of. We always discuss the logic, that if this logic is better than that logic. As I have said, we have discussed 4 logics. कहाँ गया? We have discussed this 4 logic. Now you have to take decision that which logic is sounding better, and that we accept as if now racial theory is sounding more better in terms of origin of Varna and caste system. So date time का जो frame है ना, वो history में बहस चलती है. That is why this subject makes different than other subject. Okay? Yeah. बैठ के बोलो. अब तो तुम 1929 में आ गए, मैं तुम्हें 3000 साल पहले की बात बता रहा हूं. तुम in 19, like say Shudras is a Varna, and then there are 5th Varna called Antyaj.
So fifth Varna is like you can consider it as tribes. They are not part of the Varna system. So they are called as Pancham Varna, Antyaj. They were not the part of fourfold system. So in 1929, Simon Commission came and it introduced two terms. One is SC and another is ST. So largely Shudras are SCs, not STs, and they comes from the STs. So in 1929, this term scheduled caste and scheduled tribe was introduced. So we are discussing the origin of Varna system. It came much later. अरे तो उनको बोला जाता था, उससे पहले गांधी जी ने उनको हरिजन बोला, उससे पहले इनको शूद्रा बोला जाता था, इनको 50 डेरोगेटरी वर्ड यूज किए जाते थे. तो उसको चेंज करने के लिए साइमन कमीशन ने आया ना ये टर्म. कभी किसी ने हरिजन कहा, किसी ने शूद्र कहा, किसी ने और कई सारे टर्म्स हैं, आई कैन नॉट से दिस, ठीक है ना, बहुत सारे डेरोगेटरी वर्ड्स हैं. तो तब to give them more respect, Simon Commission created this word SC and ST to give them more dignity, which was accepted by Government of India Act also, and after independence our Constitutional Assembly also. तो बहुत सारे टर्म्स थे और हर जगह अलग अलग टर्म्स है ना. बिहार में इनको कुछ और कह रहे हो, यूपी में कुछ और कह रहे हो, तमिलनाडु में कुछ और कह रहे हो. ठीक है, ठीक है. एनी मोर? हाँ, ये क्वेश्चन आपको उतना दूर नहीं जाना चाहिए. आपको तो यही पूछना था कि सर सेंट्रल एशिया में क्यों नहीं है. आप यहां पूछते तो और मजा आता आपको. कहां गया, कहां गया ये? यही है. आपको ये भी पूछना चाहिए कि ईरान इराक में क्यों नहीं है. एनीबडी कैन आंसर हर? इफ when they were living in Central Asia like Iran, Iraq, वहां पे Varna system था. Same people traveled to India, they continued with the Varna system, but now they do not have. First reason is now they are Muslims. So those people converted into Islam, they will not follow that. Number one. Number two is very important. Number two is, try to understand. टेररिस्ट अटैक्स जितना इंडिया में होता है उतना अमेरिका में होता है. क्यों? मुझे पता था ये चीप टाइप का आंसर दोगे. वहां मुस्लिम. एनीबडी? थोड़ा सा ज्योग्राफी लगाओ, आंसर दे दोगे. नहीं लगाओगे तो ये चीप टाइप का आंसर दोगे. one at a time. Let him let. No. See, in India, listen, in India, hero and villain, they have the same color. So if you have to monitor terrorist here, you have to monitor every 140 crore person, because you cannot identify. There, those who are not terrorists, they are either, those who are not terrorists, they are either extreme white or extreme black. And those who are terrorists, they may be a terrorist, they are browns. So how many browns are there in America? Those who are migrated from this South Asia kind of यही होते हैं. कितने होंगे वहां पे? कितने होंगे अमेरिका में? गेस. 1 मिलियन. उनको सिर्फ 10 लाख लोगों को मॉनिटर करना है. ये जैसे ब्राउन है, इसको एयरपोर्ट पे ज्यादा चेक कर लेना है, मेट्रो में घुसी ज्यादा चेक कर लेना है. यहाँ 140 करोड़ को मेट्रो में देखो, जरा सबको चेक करो. So question is that कि there in Central Asia, those who won and those who lost, they had the same color. So over the period, this was very difficult to differentiate between the Varnas and non-Varnas. In India, because the winners were white, the losers were black, they were easy to identify, so they kept on, get away, you live here, don't talk to us, don't eat with us, don't marry with us. That it's continued. So the color of the two persons, the invaders and the losers, were different. The system continued. Whereas in Central Asia, first because they changed their religion, and second they have the same color. So over the period that this differentiation disappeared. फिर से नहीं समझ में आया? ठीक है. तो इंडिया में हमेशा टेररिस्ट अटैक ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ 140 करोड़ लोगों को मॉनिटर करना पड़ेगा. एनीबडी कैन बी, वहां पे नहीं, ओनली दिस 1 मिलियन कैन बी.
तो अमेरिका का आदमी क्यों टेररिस्ट होगा? अरे वहां एथनिक क्लैश होगा, वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट की लड़ाई होगी, वहां पे टेररिज्म क्यों होगा? एक एक रुको, इसको समझा फिर तुम। हाँ, वो थोड़ी कि आज दारू पिए हैं तो हम टेररिस्ट हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। अब मान लीजिए जो फिलिस्तीन से वहां जाके माइग्रेट करेगा, वही हो सकता है ना। तो बस 50 फिलिस्तीनियों पे नजर रखनी है। हाँ या हाँ, जैसे तेरे पापा चाटा मारते हैं, वो भी चाटा है, और जो पुलिस चाटा मारती है, दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑल चाटाज आर नॉट सेम। ऑल टेरर कैन नॉट बी कॉल्ड एज टेररिस्ट। तेरे फादर का तेरे पे टेरर है कि नहीं? अभी आ जाएगा फोन, कैसा लगेगा? कैन यू कॉल योर फादर एज टेररिस्ट? So there are different kind. We have extremism, we have Naxalism, we have terrorism. So basically, we have all the terrors have different ideologies, and one particular ideology. जब internal security पढ़ाऊंगा तो I will explain you. We have extremism, we have Naxalism, we have terrorism. So all ism, all terror cannot be called as terrorist. Okay? Any more? थोड़ा लाउड बोलो। हाँ, टाइम नहीं था। हाँ हाँ, मतलब यस। तो वहां कहा, अरे यार रिलीजन तो इनके बहुत बाद आया ना यार। रिलीजन तब शुरू होता है जब बंदे का पेट वेट भर गया है, अब खाने पीने का जुगाड़ कर लिया, तब रिलीजन सब दुनिया में 2-2 3-3 हजार साल पहले आए। ये सब मैं बात कर रहा हूँ लाखों साल पहले की। रिलीजन को आए कितना दिन हुआ मार्केट में? जब बंदा खा पी के टाइट हो गया, अब क्या करें? लिटरेचर भी कर करके थक गया था, तो रिलीजन भी लिटरेचर ही तो है, और है क्या? अब प्लीज अपने ऊपर मत ले लेना तुम लोग, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। रिलीजन है क्या? किताब लिखो, नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ बुक्स आर कॉल्ड रिलीजियस, रिलीजियस बुक्स। यही है ना। जब इंसान के पास टाइम आ गया तो वो सोचा कुछ किया जाए, तो उसने रिलीजन बना लिया। ठीक है, डन डन, शैल बी राइट। लिख लें। और कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। दिस इज द वे यू हैव टू स्टडी। वंस यू get down from the stairs, your mind should be doubtless, no question. एक भी क्वेश्चन छूट गया, and one thing especially in my class, no questions are stupid questions. This you never do this, otherwise what you will think, अबे ये सवाल पूछूंगा सर क्या सोचेंगे, ये सवाल पूछेंगे ये क्या सोचेगी, ये सोच के अगर बैठोगे ना, यूपीएससी नहीं होगा। You have to make sure when you are getting down to the stairs, you should not have any question in your mind. Even sometime you feel shy, maybe any reason, after the class meet us, ask any question should not be there in your mind. ठीक है ना? हम we are not in hurry. जब तक समझ ना समझो या द्विज, हाँ, जो जनेऊ डालते हैं। हाँ, why they are called twice born? Because as you know that initially there were no hospitals, there are no medical facilities, so basically death rate was so high that once a child is born, the mortality of infant mortality was so high that 99% people used to die just a few days of their birth. Once they used to cross 3 or 4 or 5 years of their age, now the chances of survival will be high. I hope you understand. एक बच्चा 3-4 साल का अगर हो गया, अगर विकेट गिरना होगा तो उसी इतने पे ही गिर जाएगा। अगर नहीं विकेट गिरा, 4-5 साल निकाल लिया तो बच जाएगा। सो फिर एक सेरेमनी होती है, तुम लोग भी देखो, अगर एक, अब इसका मतलब ये अब दोबारा पैदा हो गया, अब ये नहीं मरेगा। So that is a ceremony. As I said, when you have a time, you keep on doing ceremony for. This is a celebration of now that this is a celebration of chances of more survival. और वहां से फिर उसको स्कूल भी भेजना है ना पढ़ने के लिए। यहाँ से स्कूल थोड़ी भेज रहे हैं पहले। अब तो तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिल भी पाते, पहले तो आश्रम में भेज देते तो उधर ही भीख मांग रहा है। यही होता था ना। या गॉट इट, इट इज अ सेरेमनी। ठीक है ना,
just to inform कि now this Tinku is going to rock. ठीक है? क्या लिखा लास्ट लाइन? दिखाना जरा. Pan Indian character. Change the paragraph. Change the paragraph. लिखो. As एक कंट्रोवर्शियल बात बताऊं, ये बंद होने की चांस है. थोड़ा बंद करना है इसको. भाई लोग, एक छोटी सी डिफरेंट बात बतानी है. आजकल क्या कर, वो इमेजिनेशन है, वो इमेजिनेशन है. आप समझ रहे, आप क्यों ऑन हो गया, आप समझ जा बात. अरे मैंने बता दिया तेरे को शॉर्ट में, अब माइक ऑन हो गया है. वही है. आर्यन थ्योरी पे एक नया थ्योरी आया है कि नहीं, आर्यंस वर नॉट द फॉरेनर्स, बट दिस थ्योरी इज हाईली डिबेटेबल. बेसिकली फिर ऑन है ये, थोड़ा सा उसमें गड़बड़ है, वो दिक्कत है उसमें. जब क्लास खत्म होगा तो समझा दूंगा. वो नहीं है, वो अभी तक जो चल रहा है वो आर्यन थ्योरी चल रहा है. डन. शैल वी राइट. ये माइक जब से आया है ना, हम लोग का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत कम हो गया है. नहीं तो क्या होता, पहले सारी बात बता देते थे, ये हुआ होगा. अभी तो मैं तुझे ऐसी ऐसी बात बताता ना उस वाले थ्योरी में, लेकिन नहीं. अरे ना, फिर उन लोग को लगता है ना, क्या पता क्या हो रहा होगा. ये लोग ये सोचता हो क्या हो रहा होगा. शो मी. पैर इंडियन लिखो. as the population grown, division of labor became complex. Caste system emerged. Out of Varna system. वर्णा से ही कास्ट निकला है, ठीक है ना. इट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग. आउट ऑफ वर्णा सिस्टम. एक क्वेश्चन लिख, सॉरी, वर्णा सिस्टम लिखो. कास्ट इज derived from see, Digvijay Singh Yadav is writing why we are not allowed to watch. You are allowed to watch, you are not allowed to hear something controversial, क्योंकि you will edit it, you will post it on YouTube. और यही है वो, गौर से नहीं, चैन से सोना है तो जाग जाओ. ऐसे ही शिक्षकों ने देश को किया है बर्बाद. इनको मिलती है फॉरेन की फंडिंग, ये चलाते हैं हवाला. पता चला अगले दिन हमारे ऊपर आईटी की रेड, ईडी का छापा. मिला क्या? मिला हाथों की जलन. हमने मांगी थी सफाई. फिर 4 डंडा लगेगा पीछे, बोलेगा बोल हवाला से आया ना. बोले हाँ सर, ये चश्मा आया है हवाला से. सर ये घड़ी आया है हवाला से. सर हम भी आए हैं हवाला से. देखा, आ गया इंटरोगेशन में. पुलिस जब ले जाती है तो उसको तो जो पूछना होता है. अब देखो, मेरा एक भाई पूछ रहा है हवाला का मतलब क्या होता है. अब तेरे हवाले वतन साथियों, वही होता है. हर्षदीप, when I will teach you internal security, and that it will come. ठीक है ना, बताऊंगा भाई. Caste system is derived from Portuguese word. Portuguese. रोनाल्डो. पोर्टुगीज के स्पेलिंग क्या होता है? ये Portuguese word casta. Portuguese word casta, which literally means pure race. ये प्रिलिम्स में भी आ चुका है. Pure race. There was a question in PT that caste is derived from which language. So people oftenly thinks Latin, Greek, gaya, die number, लुट गया. It's the Portuguese word. Casta, which literally means pure race. Change the paragraph. Caste is
Caste, make it underline. Caste is a contextual aspect of Verna system. Contextual means practical. Contextual aspect of Verna system. It is said that I hope you don't need break. नहीं ना, और आज ऐसे भी मैं लेट आया हूँ, ट्रेन लेट चल रही है. क्या लिखा? It is said that, inverted comma, make it underline, Verna is textual. अभिषेक राज, आई हैव सीन माई मेनी वीडियोज. वो क्या करते हैं, टैब से फिर वीडियो बनाते हैं. देखिए कैसे कैसे मक्कार शिक्षक हैं इस दुनिया में. और जैसे लिखोगे मक्कार पीपल, फिर आ जाता है खान सर के पास, फिर खान सर का फोन आता है, सर ई वाला बात मत बोलिएगा. अब हमने सीख लिया है ये बात नहीं बोलनी है. तो जैसी कुछ ऐसी बात, कोई भीतरिया बात बतानी होती है तो हम लोग ऑफ कर देते हैं माइक. ऑफ कर. तो उसको बिहार में बोलते हैं भीतरिया हिस्ट्री. तो मुझे थोड़ी देर भीतरिया हिस्ट्री बताना था तुम लोग को. भीतरिया हिस्ट्री इज नॉट सरफेस्ड, वो केवल मेरे पास होगा, समझा? हाँ, वो भीतरिया बात कॉन्फिडेंशियल होता है, तो वो नहीं बताया जाएगा. तो सीक्रेट होता है, उसका एग्जाम से कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है. बट इफ यू लुक एट, इफ यू अप्लाई द लॉजिक, यू कैन अंडरस्टैंड दिस. अच्छा, यही हो रहा है, इन्वेजन हो रहा है, लोकल जो है वो रेसिस्ट कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ देयर बेटर वेपन्स दे आर विनिंग एवरीवेयर. और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. एंड बिकॉज हिस्ट्री इज रिटन बाय द विनर्स. अब जो लिख दो, अगर यही वेपन्स उल्टा हुआ होता, ये लोग गदा लेके आए होते हमारे पास, हम पोएट्री लिखने की जगह करके रखे आ बेटा, तो उल्टा हिस्ट्री चल रहा होता. फिर अयोध्या से वो श्रीलंका नहीं गए होते, अयोध्या से सेंट्रल एशिया गए होते, और कूट कूट के आए होते. नहीं, तमिलनाडु से सेंट्रल एशिया कूट कूट के आए होते. इसीलिए ज्यादा पोएट्री पुट्री के चक्कर में नहीं रहना है. यही तुम लोग को बर्बाद. एवरी यूथ इज अ पोएट इन इंडिया. कोई आज तक ऐसा तुम्हें यूथ मिला जिसको पोएट्री नहीं, या तो लिखता होगा, या तो गाता होगा, या तो म्यूजिक करता होगा. मतलब उसका यही, उसका जीन में है भाई, समझे? ज्यादा पोएट्री लिखे, किसी डर के कोई कूट देगा, इस चक्कर में मत पड़ना. रखना ही तो कट्टा रखो, तलवार रखो, चाकू रखो. क्या लिखा? Verna is textual, whereas caste is contextual. You got the meaning of this line? It's a very deep meaning. Verna is textual, whereas caste is contextual. नहीं समझे? कोई नहीं समझा? Verna is किताबी बातें and caste is practical बातें. So what we practice is caste system. What we read is, ठीक है? What we read is Verna. What we practice is caste. Got it? लिखो. There are, change the paragraph. There are following characteristics of caste system. Following characteristics of caste system. Following characteristics of caste system. First, divine origin. Divine origin. Dash. देखो. It is said, it is mentioned that Verna system is created by अच्छा, you must know that Hindus do not have a god. ये याद है. हम तो ऐसे because of the Christian and colonial impact we say ना, God bless you and God, we have only deities. ठीक है ना? So Hindus do not have it. So Brahma is not a god, he is a deity. ठीक है ना? क्या लिखा? Hindu deity. It is created by Hindu deity. Brahma. ब्रह्मानंदम नहीं. Brahma who created from
his mouth, shoulder, thigh and feet, Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudras respectively. Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudras respectively. ठीक है? And accordingly their social positions are fixed in social order. ठीक है? So you will always believe, be it Bible or Quran, God creates everybody equal. That is the man who creates hierarchy. Among the Hindus, it is believed that this order is created by the deity called Brahma. And accordingly, so this is the divine origin of caste system. Done? Second, क्या अंतर क्या होता है? अब तो तेरे को अलग से वो समझाना पड़ेगा, अभी जरूरत नहीं, कभी आएगा तो बता दूंगा. सेकंड, गॉड की कोई बीबी लेके भाग सकता है? गॉड की बीबी होती है, सुना है? खुदा की बीबी का नाम, गॉड की बीबी का नाम, राम की बीबी है कि नहीं? काय है, तो इसलिए वो डीटी है, वो गॉड नहीं है. अब तेरे को फिर समझाना पड़ेगा, इतने में भी नहीं समझा. चांद दिखा रहे हैं, उंगली पकड़ के लटक जा रहा है. हम बोले देख चांद कहाँ है, दिखाइए. अरे समझ, डीटीज दे टेक अ ह्यूमन फॉर्म. हमारे यहाँ जो भी शंकर होगा, राम होगा, वो ह्यूमन बॉडी लेके आएगा. और जो जिस तरह से तू एग्जाम दे रहा है वो भी एग्जाम देगा, जिस तरह से तेरे पापा चपेट मारेंगे उसको भी मारेंगे. समझा? तो जो डीटीज होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में आते हैं, उनकी शेयरिंग, सफरिंग, अचीवमेंट सब कुछ तेरे जैसा होगा. गॉड का सुना है ये सब होता है? गॉड का युद्ध हुआ तो गॉड ने उसको पीट दिया, सुना तुमने? उसके भाई को बाण लग गया. सो deities are human beings. They come on this planet. There are two types of people. One who take birth. ठीक है? एक जन्म लेता है, दूसरा अवतार लेता है, लेकिन प्रोसेस उसका वही है. उसका भी 6ठी 27 शादी होगा, समझा? उसकी भी गर्लफ्रेंड होगी, फिर उनसे दुखी होके वो द्वारका चला जाएगा, दिल टूटेगा, फिर वो आ जाएगा इंडिया, वो आ जाएगा दिल्ली यूपीएससी तैयारी करने, फिर उस पर गाना बनेगा मेरी शादी में जरूर आना. यही है ना फिल्म, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी. अब तू हमको मरवा के मानेगा इस कैमरे पे बेटा, ये मेरी नौकरी के पीछे पड़ा है. एक तो मुश्किल से खान सर हम लोग को पकड़ उकड़ के एक जगह कहे, अब समझा दिए कि कोई सब बात मत करिएगा, ये सब भीतरिया बात क्लास के बाद. अब बता, अब लेके थोड़ी देर में इस्लाम में घुसेगा. कोई भी भीतरिया ज्ञान क्लास के बाद, डायरेक्ट में नहीं तो वो लोग सोचता है कि कौन सा ऐसा बात बतिया रहे हैं. यही चलवे ना, क्या देगा. फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड इज क्लोज सिस्टम. सेकंड इज क्लोज सिस्टम. क्लोज्ड सिस्टम. क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम का मतलब होता है ये क्लोज्ड है, जहां पैदा हुए हो वहीं मरना है. यू कैनॉट चेंज इट, यू कैनॉट क्रॉस दिस लाइन. सो यू बिकम, लेट्स से यू आर हियर, यू बिकम द्रौपदी मुर्मू. देखना हमेशा लिखता है, मुझे इतना गुस्सा आता है, वो लिखते हैं ना ट्राइबल प्रेसिडेंट, एससी प्रेसिडेंट. अरे भाई वो प्रेसिडेंट हो गया, उसको अभी तक वही मानो. यू वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू बिकम, यू हैव टू बॉर्न एंड डाई इन दिस ब्रैकेट. दिस कॉल्ड क्लोज सिस्टम. यू कैन नॉट क्रॉस इट. ठीक है? देखो, कास्ट सिस्टम is a closed caste system is a closed system
Caste system is a closed system in which wherever an individual is born, wherever an individual is born, they have to remain in the same varna and caste. They have to remain in the same varna and caste lifelong. How many of you are able to write Hindi also? So write one very famous line in Hindi on caste. The very, very famous line. Those who cannot write down in English. So English का मतलब Roman में ही, मतलब you cannot change. Once I will dictate it, you will find it very. It's a very famous line. जाति वो है जो जाति नहीं है. नहीं लिखना है, काहे नहीं लिखना है? The very famous line. This is called closed system. Once you are born in a caste, you have to die there. जाति वो है जो जाति नहीं है. If you are not pronunciating it properly and you are failed. जाति वो है जो जाति नहीं है. ठीक है? Second, third, hereditary occupation. Third, hereditary occupation. I hope whichsoever caste you belong, you have a hereditary occupation. Let's say anybody who's from South India here. Nobody is South India. Where are you from, sir? Karnataka. Let's say someone says from Bihar कि I belong to a caste called this. Are you able to identify which caste they are? If I say कि I belong to this caste, can you read this on this? मैं सामने हूं. अच्छा, ओके. ओ मैं सोच रहा हूं ऐसे दिख रहा है. Now, if a North Indian says कि I belong to this caste, are you able to identify which caste they are? No? So, if they say कि we are professionally jewelry makers, then you can identify. And the same, those who makes jewelry in Karnataka, what they are called there? ले गया. So, ये समझ जाएगा. अच्छा, मेरे यहाँ वाले भाई ये वाले हैं ये लोग. Got it? So every caste is having a hereditary occupation which they transfer from one generation to. Like, you got it? Like suppose we have Yadavs in North India. They are basically cattle rearers and milk products into. What do you call there? Kurwas. So अब समझ गया. अच्छा ये लोग कुरवाज है. जैसे कि इसको बोलोगे हम यादव हैं, नहीं समझेगा. फिर तुम बताओगे ऑक्यूपेशन तो समझेगा. ओके यू आर कुरवाज. So through occupation we understand कि which caste you are or wherever it is. Done? Second, third लिखो. Hereditary occupation. Every caste is having an occupation, having a fixed occupation, which they transfer from one generation to another. Nesfield called, remember? Nesfield called caste and occupational group. Nesfield, whenever you find my speed is higher, stop me. Nesfield called caste and occupational group. अभी तो बोला था, थोड़ी देर पहले ही तो आया था. Nesfield आया था. ठीक है? Done. Fourth, endogamous. Endo means
विद इन। तो शादी कहां करनी है? तो जब तुम दिल्ली आओगे तो मम्मी पापा ने सबसे पहले क्या समझाया? बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन अगर अपनी कास्ट की हो, पढ़ी लिखी हो, अगर क्वालिफाई कर जाए तो कोई बात नहीं। यही समझाया ना, यही समझाते हैं। एक तो मतलब करना ही नहीं है, क्योंकि डाउरी बाउंस, चेक बाउंस कर जाता है। When I came to Delhi, so that was my first experience. I joined Delhi School of Economics. So I hope you go to higher studies, the number of boys get down and the girls goes up. So in my college, there was around 25, 26 girls. There were 14, 15 boys. And I was so happy. So that was my first experience of my life, this kind of, demographic dividend. So my father was not educated. He was hardly educated, like he was hardly used to make science and all. ठीक है ना, 3 or 4 class kind of. So when I went to Bihar, I said कि, and he was not able to say college. He used to call it school. तो बोले कि अच्छा स्कूल में नाम लिखा गया? हाँ। अच्छा, that time I was not that habitual liar also. अभी I was new, I was more pure. अब तो चाहे एक सांस में 500 झूठ बुलवा लो। तो बोले हाँ। तो बोले अच्छा, तो लड़का लड़का का कॉलेज है? बोले नहीं दोनों का है। एंड आई जस्ट नाउ आई रिमेंबर हिज फेशियल चेंजिंग फेशियल एक्सप्रेशंस। अच्छा दोनों पढ़ता है। सो देन ही थॉट अच्छा, तो मतलब ऐसा होगा कि उनको लगा कि 80% बॉयज होंगे, 20% गर्ल्स होगी, तो इतना थोड़ी है कि इतने में ये सक्सेस रेशियो इसका आएगा। तो हाँ, सो देन सेड अच्छा, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? या, because I cannot translate it, that's the problem. So he said कि अच्छा को लड़का है, को लड़की है? हमने 24-25 को लड़की है, 13-14 को लड़का है। And he was, फिर कहना तो ऐसा होगा ना, जैसे एक दिन लड़की बैठती होगी, एक दिन लड़का बैठता होगा। तो बोले ना, जिसको जहां मन करता वहां बैठता। अब तो he was complete shocked, उनको समझ में आ गया। फिर कह रहे हैं अच्छा देखो, आजकल जमाना बदल गया, कोई चिंता की बात नहीं है, अब दुनिया बदल रहा है, जिसको जहां बैठना है बतियाना बता। देखो, जब लड़की पढ़ाई वढ़ाई का बात करेगी तो बतियाना, एने ओने का बात करे तो मत बतियाना। मैंने मनी कहा कि पढ़ाई तो मैं किसी के साथ कर लूंगा, मैं तो उसी को खोजता हूं जो एने ओने का बात कर रहे हैं। पढ़ाई की बात करने की लड़की मिली है। लुक एट, दिस इज द वे पेरेंट थिंग्स। उनको लगता है कि दिल्ली की, मतलब दिस इज द वे आवर पेरेंट थिंग। हमको लगता है कि उनके, हमारे पेरेंट्स को लगता है मेरा लड़का इतना हैंडसम है ना कि स्टेशन पे उतरेगा और 10-20 लड़की उसको पकड़ लेगी। उसको क्या पता है कि बेचारा सब कर्म कर लिया, कुछ नहीं होने वाला। एंड द सेम स्ट्रगल यू डू इट पटना, दिल्ली, स्ट्रगल सब जगह एक ही होता है। तो ये जो हमारे पेरेंट्स की गलत फहमी है ना, इसको बनाए रखना है। जैसे 2-4 लड़कों का नाम लड़की के नाम से सेव कर लो, जब घर जाओ तो उसके नाम से, किसका है सर? पापा पल्लवी ऐसी पढ़ती है, चाहे उसका नाम पवन हो। गलत फहमी बने रहना चाहिए कि मेरा लड़का भी हैंडसम है। होना कुछ नहीं है किसी का, होना एक ही जगह है, मसूरी जाके, वहां कोई चांस है। नहीं तो कितना भी ये मोमोज खिला लो, गोलगप्पा खिला लो, लास्ट में यही सुनोगे, मैंने तो कभी तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं था। तो बेटा कुछ कर लो। अरे तुम्हें पता है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, ये जो तुम लोग कुछ भी कर लो, लोग इतना शातिर होता है ना। वो एक कौन सा डक होता है ऐसे ऐसे शांत रहता है, सीधे मछली को मार दे, पकड़ लेता है, बगुला। ये लोग ऐसे तुम लोग के साथ खाता पीता रहेगा, जैसे पता चला कि इसका इंटरव्यू हो गया, खटाक पकड़ के निकल लेगा। आ तुम ठुकरा के मेरा प्यार, और बाद में बैटरी रिक्शा चला रहे हो।
जितने बिहार से लड़के लड़कियां भागते हैं, लड़की ब्यूटी पार्लर में काम करती है, लड़का बैटरी रिक्शा चलाता है। ये आशिकों का फिक्स प्रोफेशन है। जितना लड़का लड़की भागता नहीं, दो काम करता है, लड़का बैटरी रिक्शा, लड़की ब्यूटी पार्लर। हमको इस पे भी एक सोशियोलॉजिकल स्टडी करनी कि व्हाई दे गो इनटू दिस ऑक्यूपेशन ओनली। हाँ ना ना, आई थिंक इट साउंड्स इजी। अरे नेल काटने में क्या जा रहा है, आईब्रो ही तो बनाना है और क्या। अच्छा वो इतनी थोड़ी क्वालिफाइड है, वो तो सस्ते टाइप के कस्टमर जाते हैं ना, नहीं तो बाकी जब जाएंगे कहीं। इसलिए सब चक्करों में मत पड़ो तुम लोग, कुछ नहीं होना है, सब हम लोग करके देख लिए, कुछ नहीं होता है। लास्टली जब कुछ बन जाते हो उसके बाद ही जो होना होता है होता है। तो इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम, वो 8 घंटा पढ़ो, इसी से कुछ होगा। आई एम वेरी सीरियसली आई एम टेलिंग, सी आई कम फ्रॉम ए फार्मर्स बैकग्राउंड। द डे यू विल ड्रॉप योर पेन ना and your destiny is over. You will never imagine that what kind of struggle you are going to do in your life. I'm telling you, very serious. Look, this is my way of teaching, that I say very serious things on a lighter notes. कौन इतना प्रवचन दे? कलम मत गिरने देना गुरु, ये गिर गया ना तेरे हाथ से तो सोच नहीं सकता कि अभी remaining 50-60 years of life is remaining. How difficult it will be. ये जो भी हम लोग के पास है यार, सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया है, सिर्फ इसके वजह से। गांव जब जाते हैं, जब मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मिलते हैं ना, याद है हमारे साथ 5वां में पढ़ते थे करनामपुर स्कूल में, उसकी शक्ल देख के लगता है, मुझे लगता था मेरे चाचा का फ्रेंड होगा। वो कहता है मेरे साथ, तुम्हारे साथ पढ़ते थे। एक दिन मेरे फ्रेंड पूछा, अभी तेरा एज कितना हुआ? अब मैं सोचूं कितना बताऊं। फिर मेरा भांजा वही था। इन नॉर्थ इंडिया ना, दो लाइक सिस्टर सन, दे नेवर दे नेवर रिस्पेक्ट्स यू, दे नेवर रिस्पेक्ट्स देयर मामास। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स है। आवर नेफ्यूज लाइक, जो हमारे भतीजे होते थे, क्वाइट रिस्पेक्ट, बात नहीं करेगा, दूर रहेगा। अब जो भांजा होता है ना, वो अलग ही स्वैग में रहता है। तो मेरे फ्रेंड ने पूछ दिया कि अबे तेरा एज कितना हो गया? अब मैं सोचू कितना बोलूं, तब तक मेरा भांजा कह रहा, अरे आजे के हुए, मैं इनके उम्र का कि इमली का पेड़ था मेरे दरवाजे पे, कब का ढह गया। So any situation, never let it drop. I'm telling you, कुछ भी हो जाए, I know you are struggling with many things, emotional trauma है, physical fitness की problem है, घर से रोज गालियां खाते हो, पिताजी गाली दे लिए, सुनते रहो, गाली दे लिए, फोन रखो, शुरू कर दो। अभी नहीं, पापा ने मुझे ही गाली क्यों दी, काश वो मेरा बाप होता, काश मैं अंबानी के यहाँ पैदा होता। अंबानी के यहाँ पैदा होता 1.5 किलो का डायबिटीज होता अलग, समझे, फिर तेरा इलाज होता कहीं और। So nobody is a perfect. You are born here. That is why someone was asking now, even the deities who are born incarnated, they are also, look at your gods, how they have suffered. God means deities. Even the gods are suffering. You are the human being. You have to learn from them how they are struggling, how they are coming up, how they are taking up the challenges. Look at a man who is a prince, and suddenly second mother get lost for 14 years. Can you imagine that you don't have to meet your parents, anybody for 14 years? या तो स्टेशन पे चढ़ते हो, कहां पहुंचे? गाजियाबाद। कहां पहुंचे? राजघाट। जब हम लोग दिल्ली आए, सो हम लोग दैट टाइम देयर वाज नो मोबाइल, तो हम फादर बोलते थे जाके एक पोस्ट कार्ड डाल देना। डू यू नो व्हाट माय फादर यूज्ड टू डू? देयर वाज अ पोस्ट कार्ड ऑफ 15 पैसे दैट टाइम। वो एड्रेस गांव का लिख के देते थे, उनको पता था कब ये पोस्ट ऑफिस जाएगा, कब भेजेगा। तो पोस्ट 2-3 पोस्ट कार्ड पे गांव का एड्रेस लिख देते थे, बोलते थे कि जाके वहां से भेज देना। जब हम यहाँ आते थे, फिर उस पर 2-4 लिख के ठीक से पहुंच गए, जस्ट टू इन्फॉर्म दिस मच। देन वन डे आई हैव टू गो टू पोस्ट ऑफिस, then I am dropping it. My village is in such a remote area, so after 15 days he is getting this information that I have reached, and then he is writing a letter to inform me that I came to know that you have reached. Just to inform that I have reached, and he came to know that I have reached properly, it used to take 1 month. और उससे और पीछे चलते जाओ. So you are the luckiest generation. Now you have to take this opportunity into this, or you have to ठुकरा के मेरा प्यार. नहीं होता यार, रगड़ो, 2 साल का मेहनत है, रगड़ दो, फिर जितना प्यार है सब वापस आ जाएगा. मोहल्ले में 5वें से का लाइन लगेगा, जो 5वें में तुमको देखती थी, सब आ जाएगी वापस. सीरियसली बता रहे हैं.
जितनी हम लोग को ठुकरा के गई है ना, सब व्हाट्सएप पे मैसेज करती हैं। समझे? लेकिन अब मेरा टाइम है। हेलो कौन? नहीं जानते। क्या लिखो? एंडोगैमी लिखो। कास्ट इज, लिखो कास्ट इज एन endogamous group. Endogamous. Caste is an endogamous group. Individuals are not allowed to marry outside their caste. In some conditions, अनुलोमा और hypergamy, अनुलोमा is girls from the little lower caste, girl, boy from the little upper caste are allowed in some conditions. I am telling you. Hypergamy, anuloma means boy will be from the superior caste, girls will be from little inferior caste. I will give you one example. Hypergamy, anuloma is a Hindi word, but exam में आपको ऐसे ही लिखना अनुलोमा. Anuloma is permitted. So, would you like to know what is anuloma? I am telling you, just to make you understand. Within, there is one Varna called Varna is Vaishya. I hope you understand. Then in Vaishyas, hundreds of castes are there. Caste starts from Agarwal, Gupta, X, Y, Z, this, goes up to X, whatever it is. Okay, I hope some of you comes from there. So let's say Agrawals are supposed to marry Agrawals only. But in some conditions, let's say a Gupta girl want to marry a Agarwal boy. In some conditions it is permitted, but not vice versa. A Agarwal girl is not supposed to marry a Gupta boy. But in some condition, Gupta girl will be allowed to marry a Agarwal. This is called Anuloma marriage. Got it? Little inferior girl, she is allowed to marry. That is called Anuloma marriage. But not, it is not allowed vice versa. At any cost, boys should be from the upper one, not from the lower one. Done? So if you allow me, can I take a break from here and we will start it from tomorrow? Pakka? So any doubt, any problem, any suggestions in my teaching method? Pakka? झेल जा रहे हो ना? Sir? Kannadiga, it's okay with the class? Any problem? Understanding? So see you tomorrow guys at 3 o'clock, and tomorrow I will take 15 more minutes to, today I will started at 1:55 from my home, expecting 40 minutes to reach there and have a tea before, but there was a lot of jam. So tomorrow I will leave my home at 1:30 so that I can be here on time. Sorry for all the inconveniences and see you tomorrow. I have really enjoyed your presence. You are full of energy. Thank you so much. Bye. Thank you.